बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय के वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम। 51 स्कोर है। 9 ओवर्स का खेल जो है इख्तिताम पजीर हो चुका है। परवेज रसूल चाय के बाद पहली गेंद के साथ अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप जो है हो रही है इस वक्त जम्मू के लिए। शुभम खजूरिया और सुरनेश रैना के दरमियान परवेज रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं। 51 स्कोर है बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान की। अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप जम्मू के लिए। 176 रन पहली इनिंग्स में बनाए हैं कश्मीर की टीम ने। परवेज रसूल सामने शुभम खजूरिया, अच्छी गेंद थी। दिफाई अंदाज से इस गेंद को ऑन साइड की जानिब खेले। खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 51। 10वां ओवर जो है इस इनिंग्स का जारी है। परवेज रसूल इस ओवर में अगली मरतबा आए। अच्छी गेंद दिफाई अंदाज से शुभम खजूरिया खेल रहे हैं और दूसरे साइड से सुरनेश रैना जो हैं काफी तेज तरार जो हैं बल्लेबाजी इस टाइम कर रहे हैं। परवेज एक मरतबा फिर आए। गेंद की अच्छी गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा जो है परवेज रसूल की जानिब से। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइन नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो हैं आपके साथ साथ ये मुकाबला देख सके। परवेज आए। इक्यावन स्कोर है। मैडन ओवर परवेज रसूल की जानिब से। चाय के बाद का जो है खेल शुरू हो चुका है। 176 रन बनाए कश्मीर की टीम ने और जो है उनकी पूरी बैटिंग लाइन जो है बगैर नासिर लोन के जो है फेल हो गई। 176 रन का जो है पहली इनिंग्स में जो है स्कोर बनाया है कश्मीर की टीम ने। उसके जवाब में अब तक 51 रन बनाए हैं 10 ओवर्स में जम्मू की टीम ने। तो जम्मू की टीम जो है यकीनी तौर पर चाह रही होगी कि पहली इनिंग्स में लीड लें ताकि और जो है प्रेशर क्रिएट करे कश्मीर की टीम पर। इम्तियाज गनाई स्पिन अटैक जो है कंटिन्यू रखा गया है दोनों एंड से। इम्तियाज गनाई सामने एस रैना इस गेंद को खेले लेकिन इस मर्तबा जो है खिलाड़ी मौजूद हैं, गैप नहीं ढूंढ पाए। एस रैना अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा जो है देखने को मिला है एस रैना की तरफ से। दूसरे साइड से जो है शुभम खजूरिया काफी दिफाई अंदाज में लग रहे हैं लेकिन एस रैना जो है काफी जायराना मूड में इस वक्त लग रहे हैं। इम्तियाज आए। अच्छी गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी और उसका जो है पूरे सम्मान के साथ जो है खेले। इस गेंद को खेले, पीछे खिलाड़ी मौजूद। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा और एक रन जो है हासिल करने का मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास और एक रन जो है 52 स्कोर है जम्मू की टीम का। ओपनिंग पार्टनरशिप जो है अच्छी हो रही है जम्मू की टीम के लिए। इम्तियाज गनाई गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से। उनके सामने अब शुभम खजूरिया अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। शुभम इस मैच में दिफाई अंदाज एक मरतबा फिर से। स्टाइल काफी बेहतरीन है शुभम खजूरिया का और किसी रश में नहीं लग रहे हैं। शुभम खजूरिया दूसरे साइड से एस रैना जो है रन्स बना रहे हैं तो प्रेशर जो है काफी कम है शुभम पर। इस गेंद को खेले, गली की जानिब रन आउट होने का खतरा, बाहर निकल गए थे शुभम, मना कर दिया जल्दी से एस रैना ने नॉन स्ट्राइकिंग एंड से।
JKCA मल्टी डे फाइनल खेला जा रहा है और खत्म हुआ इम्तियाज गनाई का। हम दूसरे साइड से लगातार शायद परवेज रसूल ही जो है गेंदबाजी करेंगे। एक 176 रन बनाए पहली इनिंग्स में और उसके जवाब में अब तक 53 रन बनाए हैं। जम्मू की टीम में ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो रही है शुभम खजूरिया और एस रैना के दरमियान। परवेज रसूल अब अगले कुछ ओवर्स का रवा तबसरा मेरे साथी कमेंटेटर मोहसिन कमाल की जुबानी सुनिए। Hello and welcome everyone to Kashmir Sports Watch live coverage once again. We are live from Kashmir Stadium, Srinagar. It's the big final of JKCA Senior Multi-Day Tournament. Parvez Rasool is going to bowl to Suryansh Raina, who has been playing brilliantly so far. Comes in, this one driven, but the cover feeder will cut it off without making any trouble to the score card. Parvez Rasool has been holding his line, trying to find that area, but batters would find it hard to play against him. So far hasn't been quite successful. Parvez Rasool this time comes in, bowls it at good length, and Suryansh comes forward and defends it in style. The score is around 55 for none. The 11th over of the innings is in progress. Parvez Rasool now comes in to bowl against Suryansh Raina. Raina tries to hit this one. Will take 1, 2, 3 bounces and goes beyond the mid-wicket boundary. Suryansh Raina is again showing his intentions. He won't stick around. He will play his shots whenever he finds an opportunity. This one was bowled a bit short and he pulled it. There was no fielder present in the deep. Grabbed an easy 4. Parvez Rasool now will have to think what he bowls to Suryansh Raina, who is looking dangerous. Comes in, bowls it on the 4th stump and Suryansh Raina defends it. None of Shubham Khajuria or Suryansh Raina have been troubled by any of the Kashmir bowlers so far. The reason is largely that there is nothing in this wicket. It is flat. It has completely dried. There's no movement off or on the air. This time Parvez Rasool bowls a bit quicker and Suryansh Raina tries to drive it but finds an inside edge. Takes a single. I think the first innings total of Kashmir team is no way enough because Jammu batters are playing comfortably. There is no trouble whatsoever. Parvez Rasool once more this time will bowl to Shubham Khajuria. Khajuria leans forward and defends it. No run. Meanwhile, I was just given a piece of information that Gulzar Ahmed who was a super sub, had come in place of Mujtaba Yusuf, which means Mujtaba Yusuf won't be eligible to bowl now. Initially, Mujtaba Yusuf was part of the playing 11, but Gulzar, being the super sub, was replaced him in the 11, which is quite surprising. At least I couldn't understand the reason behind it. Mujtaba Yusuf could have been a vital part of Kashmir bowling because he is a left arm bowler and swings it both ways. Plus he comes up with some experience. It means Kashmir side will be a bowler short. They will surely miss the services of Mujtaba Yusuf. But this decision seems to be a strange one. Bringing in maybe the think tank might have thought that Gulzar Ahmed might score some runs, but he couldn't even open his account.
nonetheless. Now Imtiaz Ganai once more. Imtiaz doesn't give it too much ire. He bowls rather flat, just like Abid Mushtaq. The two have similar actions as well, but Abid Mushtaq is quite experienced. He has played at the highest level. Imtiaz too has done quite well in the under 23 category, but hasn't played at the senior level yet. Imtiaz Ganai once more in this over. Bowls it flat on the legs. The short leg fielder had come into the play for a second, but there was no chance to grab it. 2 runs taken in the meanwhile. Both Shubham Khajuria and Suryansh Raina are playing comfortably. They are enjoying it. This one was bowled full and Shubham Khajuria drives it in style for a 4. Lifts it over the bowler's head for a 4. This was a brilliant shot from Shubham Khajuria. Khajuria is a top class batter. It all seems easy for him since he has faced some of the best bowlers in his career so far. He's making it look so easy against the left arm spinner Imtiaz Ganai. This one was handsomely lifted over bowler's head for a 4. The clouds are now taking over the ground. There might be a short breeze or something. I can smell it. Imtiaz Ganai to this time Khajuria once again heaves it this time towards the long on boundary. This wasn't a rather good looking shot, but nonetheless got him 4 more runs. Shubham Khajuria too now trying to attack the bowler Imtiaz Ganai. Imtiaz Ganai was firstly attacked by Suryansh Raina with back-to-back 4s, and now Shubham Khajuria has taken the charge. He gets 2 back-to-back boundaries. The score moves to 68 for none. Imtiaz once more in this over. Well bowled to Shubham Khajuria. Comes in, bowls at full, and this time again. Beautifully played by Shubham Khajuria. This time he finds a boundary in the mid-wicket area. What a player this guy is. He's making it. He's playing with the bowler literally. 3 boundaries of 3 balls. This is some batting from Khajuria. He is just displaying how easy it is to bat on this wicket. Once again, showing us how many loopholes there were in Kashmir batters. Batting on a trick like this is rather easy for someone like Shubham Khajuria, since there is no spin or swing. Khajuria this time. Khajuria knew there was a fielder in deep mid-wicket now, so he defended it comfortably. Score is now 72 for none. Both Khajuria and Suryansh Raina enjoying it. They don't seem to be in any sort of trouble. None of the bowlers have impressed so far. So will there be a bowling change? Let's see. Nasir Lone is the only bowler in the side apart from the 4 who have been already used. Parvez continues to bowl from the stand. He will bowl to Suryansh Raina, who is a left-handed batter, and off-spinners often enjoy bowling to left-handers. And once more time I will remind you that Mujtaba Yusuf is no more part of the playing 11. He has been replaced by super sub Gulzar Ahmad, meaning we won't be able to see Mujtaba Yusuf bowling, which is quite surprising to me. Parvez Rasool comes in, bowls to Suryansh Raina. Suryansh Raina guides it towards cover fielder. No runs added to the total. The scorecards remains 72 for none in 13 overs. Parvez Rasool bowling from the stand to Suryansh Raina. This one was pitched full and Suryansh Raina nudged it for a single. Parvez Rasool seems a bit unhappy with single being made available in the circle. Now Khajuria will take the strike. Parvez Rasool will come over the wicket to Khajuria. There's slip in place and a short leg. Parvez Rasool comes in, bowled beautifully, but Khajuria seems to have no problems facing
Parvez, who has looked dangerous lately, but in this match has been ordinary so far. Hasn't found any turn or bounce, nothing so far. This one again bowled straight and Khajuria defends it. The thing with Shubham is that he enjoys playing. He keeps it busy, keeps taking ones and twos. Parvez Rasool once again, this time defended on the back foot. So Mujtaba Yusuf, as I was talking, he won't be available to bowl in this match, since he was replaced in the playing 11 by super sub Gulzar Ahmad. He was initially part of the playing 11 but was replaced by super sub. Parvez Rasool this time, it was bowled on the legs and Shubham got himself a single. Easy singles are available. Jammu batters are both taking singles and scoring boundaries. Skipper Fazil Rashid has to think something out of the box. It isn't working at the moment. The plans are no way working. Imtiaz continues to bowl. It seems as if Nasir was told to bowl and then swiftly he was changed. So Imtiaz will continue. Imtiaz from the commentator's end. Abid Mushtaq was record-in-chief for Jammu, taking 6 wickets, while for Kashmir, Nasir made 53 runs. The JKCA orange side made 176 in the first innings. In response to it, Jammu are 72 for none. Imtiaz Ganai will bowl to Shubham. Oh, this time again, heaved. Umar Nazir tries to put in the dive, but it was of no use. Ball goes across the boundary for another 4. This is the 4th boundary from Shubham to Imtiaz Ganai. He hit 3 of them in the last over. शुक्रिया मोहसिन भाई। तो उम्दा बल्लेबाजी शुभम खजूरिया और सुरनेश रैना के दरमियान जो है इस वक्त जारी है। 176 रन बनाए हैं कश्मीर की टीम ने पहली इनिंग्स में, और उसका ताकुब करती हुई इस वक्त जम्मू की टीम। इम्तियाज गनाई एक और बड़ा स्ट्रोक, लेकिन इस मरतबा जो है रोकने में कामयाब इम्तियाज। हाथ में हल्की सी शायद चोट लगी है इम्तियाज के। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइन नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जो हैं आपके साथ साथ ये मुकाबला जो है घर बैठे देख सके। इम्तियाज गनाई जोर में अगली मरतबा बड़ा स्ट्रोक, मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। शुभम खजूरिया के बल्ले से एक और चौका। उम्दा बल्लेबाजी, जितनी तारीफ इन दोनों बल्लेबाजों की जाए उतनी कम है। कश्मीर की पूरी टीम जो है सिर्फ 176 पर ऑल आउट हो गई थी, और उसके ताकुब में अब तक जो है 80 के ऊपर रन जो है ओपनिंग स्टैंड बना चुके हैं जम्मू के बल्लेबाज। इम्तियाज शॉर्ट गेंद, इस गेंद को खेले हवा में जरूर थी, लेकिन इम्तियाज गनाई के काफी दूर थी, और 1 रन जो है इस असना में दोनों बल्लेबाजों ने बना लिया है। सुरवेश रैना अब स्ट्राइक पर आ गए। पहले काफी देर तक जो है खामोश बैठे थे शुभम खजूरिया, और अच्छे स्ट्रोक खेले थे सुरनेश रैना ने, लेकिन उसके बाद जो है अब शुभम खजूरिया ने भी जो है उनका साथ देना शुरू कर दिया। इम्तियाज गनाई इस ओवर में अगली मरतबा आए। बड़ा स्ट्रोक इस मरतबा हवा में है, लेकिन खिलाड़ी से दूर गिरी है। चांस जो है क्रिएट हुआ था, लेकिन खिलाड़ी से काफी दूर थी, तो महफूज अपनी क्रीज में सुरनेश रैना, तनवीर मलिक, केवल कुमार, सूफी रमीज, उमर जरगर, आशुक गनाई। 84 स्कोर है जम्मू की टीम का, बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान। अच्छी गेंद, दिफाई अंदाज से इस गेंद को खेले,
ओवर ख़त्म हुआ तो 84 स्कोर हैं बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान के। 84 ओपनिंग स्टैंड मिल चुका है अब तक जम्मू की टीम को। उम्दा बल्लेबाज कश्मीर की टीम जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान इस वक्त कश्मीर के सभी प्लेयर्स। परवेज रसूल कंटिन्यू हमारे अपोजिट एंड से गेंदबाजी करने के लिए अभी तक जो है काफ़ी कोशिश में लगे हैं। परवेज रसूल के एक विकेट जो है एक ब्रेक थ्रू मिल जाए कश्मीर की टीम को, नहीं मिल रही है। आरिफ रशीद वालेकुम सलाम, और इन्जॉय कीजिएगा घर बैठे इस मुकाबले को और शेयर भी कीजिएगा ज़रूर ताकि और भी लोग जो है ये मुकाबला घर बैठे देख सकें। परवेज रसूल अच्छी गेंद, अटैकिंग फील्ड रखा है परवेज रसूल ने। 84 स्कोर है बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान के। परवेज उनके सामने सुरनेश रैना काफी करीब है अपनी अर्धशतक से। सुरनेश रैना बड़ा स्ट्रोक मारने की कोशिश लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। एक ही रन जो है इस असना में मिल जाएगा। तो मेरी व्यूअर्स से जो है एक मरतबा फिर से गुजारिश है कि इस लाइव नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो है आपके साथ साथ ये मुकाबला जो है देख सके। 85 स्कोर है बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान के। जम्मू दूसरी इनिंग्स जो है इस मैच की जारी है। पहली इनिंग्स में जो है कश्मीर की पूरी टीम 176 रन पर ऑल आउट हो गई। इस गेंद को खेले मिड विकेट की जानिब, खिलाड़ी मौजूद, चहलकदमी के साथ एक रन हासिल कर लिया और स्कोर जो है बढ़ता हुआ 86। परवेज रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने अब सुरनेश रैना। एक विकेट की अशद जरूरत है इस वक्त कश्मीर की टीम को। कौन सा बॉलर जो है उन्हें इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में जो है एक ब्रेक थ्रू दिलाएगा, अब देखने वाली बात होगी। कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा बॉलर जो है कश्मीर की टीम की जानिब से जो है पहली विकेट हासिल करेगा। इस गेंद को खेले ऑन साइड की जानिब लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 86 बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान के जम्मू सुरनेश तैयार सामना करेंगे परवेज रसूल की गेंद का। अच्छी गेंद, दिफाई अंदाज से इस गेंद को खेले और खत्म हुआ परवेज रसूल का। इस ओवर में भी जो है विकेट नहीं मिल पाई कश्मीर की टीम को। JKCA सीनियर मल्टी डे फाइनल जम्मू बनाम कश्मीर। कश्मीर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करके जो है 176 रन बनाए थे अपनी पहली इनिंग्स में, जिसके जवाब में अब तक जो है 86 रन बनाए हैं जम्मू की टीम ने। ओपनिंग पार्टनरशिप जम्मू के लिए हुई है। अगले कुछ ओवर्स का रवा तबसरा मोहसिन कमाल की जुबान। Nasir Lone comes to the attack now. He was brilliant with the bat. Now it would be interesting to see whether he repeats the magic with the ball or not. It's a medium pacer. They'll bowl from the commentary end. Let's see if he would be able to get Kashmir the breakthrough they have been desperately waiting for. Nasir will bowl with one slip and a gully. Point is there. There's third man cover. Long on, not long on, mid on and mid off and mid wicket. Nasir Lone for the very first time with the ball. Walks in. Bowls it on the legs. Khajuria plays it easily for a single towards short mid wicket. Both Suryansh, Raina and Shubham Khajuria are enjoying it. They are making it look easy. They don't seem to have any problems facing any of the Kashmir bowlers. Now it is Nasir Lone again as Suryansh Raina. Both of them have been teammates at the under 23 level. Both of them know their strengths and weaknesses. That's what makes this competition much more interesting. Nasir Lone for the first time to Suryansh Raina.
Raina. This was bowled a bit outside off. Raina tried to cut it, but it wasn't there to hit. The ball didn't bounce much. And Suryansh leaving it to the wicket keeper. The score is 86 for none in 16 overs. Nasir lone. Once again in this over. Bowls it on middle and leg, and Suryansh defends it. No trouble so far. Nasir swings it into the left-hander and swings it out to right-handers. It is JKCA Senior Multi-Day Final going on at Kashmir Stadium, Sunwa, Srinagar. Nasir lone. Will bowl to Suryansh. Raina comes up. Bowled a bit short and no ball called. Means Nasir lone crosses the front foot while putting in the effort. There have been rarely any no balls in this match, especially front foot no balls. Probably it was the first front foot no ball of the match. Nasir lone will bowl to Suryansh. Raina, who has looked in great touch. This time comes in, bowls it short. Raina nudges it towards square leg for a couple of runs. There was Sharukh Dar, placed it fine leg. He ran in and 50 runs for Suryansh Raina. What a display of batting from this youngster. He played some extraordinary shots to both seamers and spinners. Has been some knock from him. Played brilliantly. Brings up his half century. It's pertinent to say that from Kashmir side, Nasir lone was the only player to score a 50, while for Jammu, both the openers are looking comfortable. The score is 86 for none. 17th over is in progress. Nasir lone to Suryansh Raina. Bowled short, and what a shot! Oh my goodness. This is some shot from Suryansh Raina. He stands still and drives it handsomely towards cover boundary for a 4. What a shot that. Now even Nasir lone seems to be impressed with this shot. Suryansh Raina stood tall there and played a handsome drive. This guy has some good drivers in his tally, I must say. Free-flowing batters like Suryansh Raina are so good to watch. Nasir lone now round the wicket to Suryansh Raina. The ball too full, and this time again driven by Suryansh Raina. But there's protection is this time in the deep. Only single. It seemed as if Suryansh Raina was trying to get another 4 for himself in there. But the fielder was quick to get in there on time. Only single taken. This has been extraordinary innings from Suryansh Raina. There was pressure, but he came and conquered it with some ease. Parvez Rasool continues to bowl from the stand. Rasool hasn't looked that good today with the ball. Not as of now, at least. It's a 3-day match. Suryansh Raina will face Parvez Rasool now. Can Parvez Rasool get Kashmir their first wicket? Let's see what the experienced campaigner Parvez Rasool has in store. Will bowl to Suryansh Raina this time. Comes in. Ah, there was a chance. A hard chance, but dropped by Parvez Rasool. It was hit hard, but Parvez couldn't grab it. It was hit straight to him, but with some speed. Another chance given to Suryansh Raina. He seems to have come up with all the luck today.
Parvez Rasool once more. Bowled beautifully. So how costly is going to be that drop? But one must say that it was hit very hard. But these kind of catches are grabbed it at the higher level. Parvez Rasool now comes in. Oh, this one spun a bit and bounced a bit. Suryansh Raina couldn't do anything about it. Brilliant bowling this. Seems like Parvez Rasool is getting into his groove now. It usually takes some overs for spinners to settle down in test matches, in multi-day matches. Parvez Rasool this time bowls it beautifully again and Suryansh Raina defends it. The silly point fielder is getting into the action now. Almost collecting the every ball. Slip and silly point in place. Parvez Rasool comes to bowl to Suryansh Raina. Comes in. Pitches it full and this time Suryansh Raina heaves it. What a shot that. 6. A big one. The ball has gone out of the ground. What a shot that from Suryansh Raina. This guy is some player. He looks so handsome while sweeping the ball. With this 6, the score guard moves to 100. Jammu team crosses the 100-ton mark with no wickets down. A beautiful shot that from Suryansh Raina. What a shot that. You have to love this player. He is playing some knock here. Parvez Rasool once again. Bowled a bit flat this time and Suryansh Raina rolls his wrists for a single. 103 for none. I think seems to be working for Kashmiri bowlers. They are looking rather ordinary in front of these two players, Suryansh Raina and Shubham Khajuria. Suryansh Raina has been leading the ship while Khajuria plays it calmly from the other end. Nasir Lone for the second time will bowl to Suryansh Raina, sorry. Around the stump. There's slip and a gully in place. Nasir Lone round the stumps. Score reads 102 for none. Nasir Lone round the stumps. There was again some chance. It was guided towards third man. Usaid tried his best. It was a great effort there by gully fielder Usaid. It seemed he is in the game, but it was a bit far away from him. He put in the full dive but couldn't get there. Suryansh Raina is being brave, and as they say, luck favors the brave. He has been brave ever since he came to the crease and he is making most of it. Nasir Lone once more. This time was ball short and Suryansh Raina guides it towards third man boundary for another 4. This man is looking in great touch. Nothing seems to be troubling him. You bowl him short, he will put it to the third man boundary. You bowl him full, he will put it to the cover boundary. Nothing at all seems to be working against him. It's extraordinary display of batting. Raina is playing all his shots. All the shots he has got, he has played it. What to bowl against him? Nothing is working. Bowl it short, he is good at it. You bowl it full, he is good at it. You bowl it at good length and it depends his... Now Nasir once more, this time bowled at good length and again Suryansh Raina puts it for a single. But Raina has looked in tremendous touch. He has played some beautiful shots. If just there was crowd, they would have loved to cheer for him. This guy is playing really well. But Shubham Khajuria too isn't playing ordinarily at the other end.
He's a busy player. He keeps on getting those singles. This time another no ball from Nasir Lone. Seems like Nasir Lone is missing his run up or something. Bowled his second no ball, front foot no ball. Nasir Lone bowled his second no ball of the innings. Abdul, वो prone player. Nasir Lone. Will bowl to Suryansh Raina now, who has hit already 2 fours to him in this over. Raina. Well bowled this time, but can't stop Suryansh from taking singles. If nothing, Suryansh gets a single on almost every ball. That's what is making it hard for Kashmir bowlers. Seems like Jammu batters have come out to enjoy. There's no pressure whatsoever. They are having fun while Kashmiri bowlers continue to toil. Score is 102. Nasir Lone once more. Bowled it full, and what a shot that! But cut off by the point fielder. It was driven handsomely. Took some effort from Imtiaz Ganai to stop it from going to the boundary. 115 for none. Actually, we get late score updates. That's why there is some delay at times while updating the score. Kashmir team earlier were bowled out on 176 and Jammu is 115 for none. Nasir Lone once again in this over. Bowls it short. What a ball that. That was a good bouncer. Suryansh Raina put on a dock right on time. Nasir Lone finishes this over. Both the batters are looking set. Nothing is troubling them at the moment. Where from Kashmir gets that wicket? Who can give them that important breakthrough? Who do you think is the bowler who will get the first wicket? Tell us in comments. Which bowler do you think will take the first wicket for Kashmir side? Share your opinions. We will read them out. It's Jammu playing. JKCA Blue, aka Jammu. Parvez Rasool continues to bowl from the tea end. Will bowl to Shubham Khajuria. Oh, bowled brilliantly. Pushed. Parvez Rasool bowling from the tea end. Will bowl to Shubham Khajuria, the experienced Shubham Khajuria. Bowled it beautifully, but this time Shubham Khajuria tried to guide it towards third man, but wasn't successful. It was cut short by Umar Nasir. Everybody is writing that Parvez Rasool will get Kashmir their first wicket. Let's see whether he does or not. Parvez Rasool has broken a lot of partnerships in the past. He has to step up. Comes in bowl to Shubham Khajuria. Oh! There was another chance. The short leg fielder was in play there. At top edge, which he couldn't grab. But it's never easy to field at short leg. A chance dropped. Another chance. Parvez Rasool once again. There have been some chances which weren't grabbed by the fielders. If Kashmir has to make a comeback into this game, they will have to grab any opportunity that comes to their way. There's no margin for error. Parvez Rasool this time will bowl to Shubham Khajuria. Khajuria leaps forward and defends it. Gets a single there. There was a fumble in the field. 116 for none. Nasir Lone will continue to bowl from the commentary end.
There was another chance dropped this time. Shubham Khajuria was dropped at short leg. How costly are these drops going to prove for Kashmir side? Let's see. So far Jammu looks comfortable and on top. If they continue to play like that, they might steal this match with rather ease. Nasir alone now. Will bowl to Shubham Khajuria. Can Lone get a wicket here? All eyes on him as he runs in, comes in, holds it on a good length. Khajuria defends it comfortably. I haven't even found an iota of doubt in Khajuria's mind since the very first ball. He has come and enjoyed his stay. Nobody has troubled him so far. He is unbothered. Playing his shots, defending everything, doing everything he can. Nasir Lone once more comes in. Beautifully played for a single this time because there is a third man in place. Wide third man. Sharukh. Nasir Lone marking his run up once again because he wants to make sure he doesn't bowl any more no balls. He has already bowled a couple of them. Nasir Lone made 53 runs with the bat, but he hasn't looked impressive with the ball so far. Was taken for stunners by Suryansh Raina in the previous over. Let's see what he does in this over. Will bowl to Suryansh Raina once more comes in. Bowls it short. There's a chance. There's a chance. Can Fazil Rashid get it? Yeah, he does. Nasir Lone gets Kashmir team the big breakthrough. Suryansh Raina is gone. Nasir Lone bowled a good short ball and Suryansh Raina wasn't in line of this ball and he tried to heave it but found a top edge. Is turning back to the he played a brilliant knock nonetheless. Was undone by a bouncer by Nasir Lone. Raina walks back towards the pavilion after scoring impressive 72 runs. The new batter walk is Hanan Malik. He also is in great touch. Suresh Raina is being received by clappers from the Jammu dugout. तो पहली विकेट जो है मिल गई है। कश्मीर की टीम जो है काफी देर से जो है इस मौके का इंतजार कर रही थी। नासिर लोन ने ये विकेट दिला दी है। बैटिंग में भी नासिर लोन ही जो है वाहिद बल्लेबाज है जो इस मैच में कुछ कमाल कर पाए हैं कश्मीर टीम की जानिब से, और अब बॉलिंग में जो है अहम ब्रेक थ्रू जो है अपनी टीम को दिला दी है। 117 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है। शुभम खजूरिया और सुरनेश रैना के दरमियान। सुरनेश रैना आउट होकर वापस जा चुके हैं, नासिर लोन का शिकार हुए। तो अब नए बल्लेबाज हनान मलिक खेलने के लिए आए। हनान भी जो है एक मंजे हुए बल्लेबाज है। हनान सामना करेंगे नासिर लोन की गेंद का। वाहिद आउट होने वाली विकेट अब तक जम्मू की जानिब से जो है सुरनेश रैना जो शिकार हुए, अभी इस ओवर में जो है शिकार हुए थे नासिर लोन का। नए बल्लेबाज हनान मलिक, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शुभम खजूरिया। तैयार हैं अब हनान मलिक। नासिर ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद। पहली ही गेंद जो है एक पटकी हुई गेंद डाली थी हनान मलिक को और गेंद को लीव किया विकेट कीपर के लिए हनान मलिक ने। स्कोर बदस्तूर 117 एक खिलाड़ी के नुकसान के। पहली इनिंग्स में कश्मीर की पूरी जो है टीम 176 रन पर ऑल आउट हो गई थी
53 रन की एक अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छी बैटिंग की थी नासिर लोन ने, और अब बॉलिंग में भी जो है अपनी टीम को विकेट दिला दिया है नासिर चले। इस गेंद को खेले ऑन साइड की जाने, पीछे खिलाड़ी मौजूद और अपने इनफरादी स्कोर का आगाज किया इस एक रन की मदद से हनान मलिक ने। 118 एक खिलाड़ी के नुकसान के। जम्मू की टीम की अगर बात की जाए तो उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि जितनी ज्यादा लीड जो है उनको पहली इनिंग में मिलेगी, उतनी ही ज्यादा जो है उनकी पोजीशन अच्छी होगी इस मैच में। 3 डेज जो है फाइनल है और 90 डेज जो है का एक दिन जो है मैच खेला जाएगा। पर डे 90 ओवर्स का जो है खेल खेला जाएगा। इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी बीट हुए इस मरतबा शुभम खजूरिया। ओवर खत्म हुआ, कामयाब ओवर नासिर लोन के लिए और कामयाब ओवर कश्मीर की टीम के लिए। तो जितने भी व्यूअर्स जो हैं हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनसे गुजारिश है कि इस लाइव नशरियात को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ जो है और लोग भी इस मुकाबले को देख पाए। आदिल, शेख, खालिद, इशफाक भट्ट, मीर आजम, बरकत लोन, इशफाक भट्ट, सूफी बिलाल, वाहिद और मोहम्मद हुसैन जो हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबका तहे दिल से खैर मकदम। अपना प्यार जो है देने के लिए आप जो हैं हमें स्टार्स भी जो हैं सेंड कर सकते हैं। शाहरुख डार को अब लगाया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स की अपोजिट एंड से। उनके सामने हनान मलिक अभी अभी खेलने के लिए आए हैं। 1 रन बनाकर नाबाद है। 118 स्कोर है। 21 ओवर्स के इख्तिताम। अच्छी पोजीशन में जम्मू की टीम लग रही है। शाहरुख डार पहली स्लिप, दूसरी स्लिप गली, अब तीसरी स्लिप पर भी जो है खिलाड़ी को लगाया गया है। तीसरी गालिबन चौथी स्लिप पर जो है यानी कि 3 स्लिपों के साथ शाहरुख डार गेंदबाजी कर रहे हैं हनान मलिक को। शाहरुख चले, इस गेंद को खेले, बेहतरीन स्ट्रोक। इस मैच का अब तक का बेहतरीन स्ट्रोक हनान मलिक के बल्ले से लगता हुआ पहला चौका हनान मलिक के बल्ले से लगता हुआ। स्टाइलिश स्ट्रोक था और टाइमिंग से भरपूर, एफर्टलेस स्ट्रोक कहा जा सकता है इसको। सिर्फ टाइम किया था और गैप जो है ढूंढने में कामयाब हो गए हनान मलिक और पहला चौका हनान मलिक के बल्ले से लगता हुआ। 122 एक खिलाड़ी के नुकसान के। इस 3 डेज मैच की दूसरी इनिंग्स से सिबत जारी है। पहली इनिंग्स में 176 रन बनाए हैं कश्मीर की टीम ने, उसके जवाब में 122 रन बनाए हैं अब तक एक खिलाड़ी के नुकसान के जम्मू की टीम। शाहरुख डार आई गेंद की, इस गेंद को हल्के हाथ से ऑन साइड की जानिब धकेला। डीप फाइल लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने फील्ड किया। स्कोर में सिर्फ 1 रन का इजाफा। 123 एक खिलाड़ी के नुकसान। शुभम खजूरिया अब स्ट्राइक पर गार्ड ले रहे हैं अंपायर से। गार्ड लेने के बाद जो है मार्क कर रहे हैं। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है शुभम खजूरिया और सुरनेश रैना की जानिब से। 114 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। सुरनेश रैना जो है नासिर लोन की गेंद पर जो है आउट हुए थे। उसके बाद हनान मलिक जो है अब साथ दे रहे हैं शुभम खजूरिया की। इस गेंद को हल्के हाथ से खेलकर चहलकदमी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने जो है 1 रन हासिल कर लिया और अब हनान मलिक वापस स्ट्राइक पर। इस लाइव नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो है इस मुकाबले को जो है घर बैठे देख सके। JKCA सीनियर मल्टी डे फाइनल जम्मू बनाम श्रीनगर बराह रास्त आप शेरी कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर से देख रहे हैं अपने पेज कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पेज पर। ये मुकाबला जो है 3 दिन तक जो है खेला जाएगा। शाहरुख डार
आए गेंद की, अच्छी गेंद की, हल्के हाथ से ऑन साइड की जानिब धकेला। पहला रन तेजी के साथ हासिल किया था हनान मलिक ने, लेकिन दूसरा रन जो है वहां पर नहीं मिलेगा। शुभम अब स्ट्राइक पर वापस आ गए, सामना करेंगे शाहरुख डार की गेंद का। एजाज, रसूल, मलिक, जावेद अहमद, सोफी माजिद, इशफाक बस्ट, राशिद अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश दत्त भी हमारे साथ जुड़े हैं और अली मोहम्मद बांडीपुरा से खैर मकदम सराफ का भी और वकील तांत्रे भी जो है मुकाबला देख रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी मौजूद, देखना होगा रोक पाएंगे या नहीं। और गेंद जो है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। शुभम खजूरिया के बल्ले से एक और चौका लगते हुए क्या उम्दा बल्लेबाजी की है शुभम खजूरिया ने। 42 के स्कोर पर जो है नाबाद है शुभम खजूरिया। अब देखना होगा इस मैच की तीसरी अर्धशतक जो है बनाने में कामयाब होंगे शुभम खजूरिया या नहीं। पहली अर्धशतक कश्मीर की जानिब से नासिर लोन ने लगाई थी, उसके बाद जम्मू की जानिब से सुरनेश रैना ने जो है अर्धशतक की बारी खेली है अपनी टीम के लिए। अब अर्धशतक के नज़दीक शुभम खजूरिया, स्टाइलिश प्लेयर, और इनको जो है इनकी बल्लेबाजी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। स्टाइल से भरपूर शुभम खजूरिया कश्मीर की जानिब से काफ़ी जो है नेशनल मैचेस खेले हैं और रणजी टीम का भी हिस्सा रहे। स्पिन अटैक जो हमें लग रहा था कि परवेज, रसूल और इम्तियाज़ गनाई जो स्पिन गेंदबाज हैं कश्मीर के पास, लग रहा था कि शायद जो है वो चल पाएंगे इस मैच में, लेकिन अभी तक जो है कोई ब्रेक थ्रू जो है इन दोनों स्पिन गेंदबाजों ने नहीं दिलाई है। और अगर बात की जाए जम्मू की जानिब से आबिद मुश्ताक की, उन्होंने 6 विकेटें जो है इस मैच में लिए। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाज है और क्या उम्दा गेंदबाजी देखने को मिली है उनकी जानिब से। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है और एक हैट्रिक भी जो है अपने नाम की है इस मैच में अब तक आबिद मुश्ताक ने। नासिर लोन नए ओवर के साथ कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से उनके सामने हनान मलिक, लेग स्टंप से बाहर। इस गेंद को बड़ा स्ट्रोक मारने की कोशिश की थी हनान मलिक ने, कामयाब नहीं हुए इस मर्तबा। माजिद, जावेद, मुनीर, जावेद अहमद, इशफाक बट, समाद मलिक, सईद कुमार हुसैन, राशू मनहाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमाद मलिक, खैर मकदम, उम्दा स्ट्रोक, गैप में खिलाड़ी गेंद के पीछे। पहला रन तेजी के साथ हासिल किया और दूसरा भी जो है आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों को मिल गया। 130 स्कोर एक खिलाड़ी के नुकसान के जम्मू की टीम का। 176 रन बनाए थे पहली इनिंग्स में कश्मीर की टीम में, जिसमें हाईएस्ट स्कोरर रहे थे नासिर लोन कश्मीर की जानिब से। नासिर लोन ने 53 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली थी। बाकी सभी जो हैं प्लेयर्स कुछ बड़ा जो है कारनामा नहीं कर पाए इस मैच में। इस गेंद को खेले ऑन द स्ट्रोक, गोली की रफ्तार से गेंद जो है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। हनान मलिक का जो है पहले ही जिक्र कर लिया था मेरे साथी कमेंटेटर मोहसिन कमाल ने, एक अच्छे टच में है और एक अच्छे प्लेयर है हनान मलिक। जम्मू की टीम की जानिब से इस मुकाबले का हिस्सा है और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी
देखने को मिली हैं। अभी तक सभी बल्लेबाजों की जानिब से जितने भी बल्लेबाज जो हैं जम्मू की तरफ से खेलने के लिए आए हैं, अगले कुछ और उसका रवा तबसरा मेरे साथी कमेंटेटर मोहसिन कमाल की ज़ुबान। As I said in the beginning, Hinan Malik is a tremendous player. He is in form of his life right now. And getting him out will be the toughest task for Kashmir bowlers. Nasir this time tries to bowl another bouncer, but again crosses the front foot and bowls his third no ball. Nasir has been putting some effort in the bowling and which is visible from the bouncers he is bowling. But Hinan Malik, I was talking about him, he is a tremendous player. The one to look out for. I'm assuming he will be one of the future stars of J&K. He has everything that is required to play at the highest level. Just he needs those opportunities at the right time. Nasir once more comes to Hinan Malik. Hinan Malik this time heaves it. What a shot that! Pulled away for 4. Brilliant display of batting by Hinan Malik. This guy is playing some shots. Nasir bowled it short again, and this time Hinan Malik pulled it towards mid-wicket boundary. What a shot that! This guy doesn't leave any bad ball alone. He offers shots whenever there is an opportunity to offer one. Jammu team is looking quite comfortable at the moment, despite Suryansh Raina being sent back by Nasir Lone. Hinan has only looked better. He has been scoring runs constantly in all the trial matches. Even at the national level, he has played some brilliant knocks for J&K. Nasir Lone round the stump to Hinan Malik. He has now 2 fielders in the leg side, one at square leg and one at mid-wicket. The plan seems to be bowling short balls. Here he comes again, bowls a short ball, well left by Hinan Malik, but a good short delivery this by Nasir. Nasir is bowling well, but nonetheless Hinan is in control. Nasir now comes over the wicket. Seems like there is a change in plan. According to field, he must be bowling short because he has got square leg and mid-wicket in place. Now comes in over the wicket to Hinan Malik. Bowls it on the legs, and what a shot again! But some tremendous effort there by short mid-wicket fielder. This was short, but this time there was fielder in the deep, only 1 run. Brilliant. And Malik is in great touch, and it is visible from his batting. He has played some fabulous shots despite being just 2 overs old at the crease. Now Sharukh from the stand will bowl to Hinan Malik, who's playing his shots all around the park. Skipper Fazal Rashid behind the wickets. Sharukh has asked for a change in field. He's asked the third man to go a bit deep. Moves the point fielder towards gully, and now comes in. Seems like he has planned to make Hinan play towards offside, or bowls it to the legs. There's a bit of appeal, but seems it has touched Hinan's left thigh. There was a short appeal, but there was no enthusiasm in this appeal. Sharukh knew it is Malik getting ready to face Sharukh once more in this over. Earlier, Kashmir team posted a score of 176 runs with Nasir making 53. In response, Jammu are easy. Oh, well bowled that. There's appeal. There's a huge appeal this time, but umpire denies.
Says there's no connection. It seems the ball deviated a bit at the last moment and it seemed as if he has nicked it. But umpire said no, it hasn't. So I was saying Kashmir posted a total of 176, which is quite below par on this flat wicket. Nasir made 53, Fazil Rashid 30, while for Jammu, Abid Mushtaq was pick up the bowlers taking 6 wickets. In response, Jammu are comfortably playing on 130 for the loss of 1 wicket. The only player to go was Suryansh, who also made brilliant 72 runs. Sharukh now to Inan Malik. Bowls it full and what a shot that. But was cut off by the mid-off fielder. Sharukh will now bowl to Inan Malik. Inan is playing well. Hasn't been troubled by any of the bowlers. Sharukh with 1 slip in crease. Ball, a short ball but down the leg. No run there. Inan tried to pull it but it wasn't in the range. 140 score. The only wicket to go was Suryansh Raina, who also made 72. Now the trial is just 36 runs. Suryansh Raina. Well bowled. It was bowled back up the length and Inan Malik defends it comfortably. The score remains 140 for 1. Inan Malik and Shubham Khajuria at the crease. Inan is at strike while Shubham Khajuria is at the non-strike position. Sharukh once more. Then he unfolds some magic here. Bowls a short delivery, brilliant short delivery. But Inan had seen it. He let it go to the wicketkeeper, Fazil Rashid. Another over comes to an end. The score remains 140 for 1. Nasir will continue from the commentators and he is the only bowler to take a wicket as of now. Earlier he did it with the bat and now he is trying to do it with the ball. Parvez Rasool was bowling from the steam end earlier, but he didn't look to be troubling Jammu batters, so was replaced by Sharukh. Now Nasir will continue to bowl. Nasir comes in with a long runner, bowls another short delivery. Nasir has come with a clear plan to bowl it short to both the batters. Shubham Khajuria, I have seen him facing some problems with the short ball. So Nasir will be testing him with those bouncers with 2 fielders in the deep, the square leg and mid-wicket, deep mid-wicket. Nasir once more. This time will come over the wicket to Shubham Khajuria. Comes in. Bowls it full, what a shot that, but was cut off at the point by Sharukh. Nasir is mixing his deliveries. Bowls one short, bowls one full, bowls one good. It can be useful, but it can be damaging as well. You have to stick to one line in multi-day cricket. You can't be changing lengths every now and then. But let's see, Nasir might have a plan. Comes over the wicket once again to Shubham Khajuria. Bowled it too full, and this time Khajuria, it was too easy. He drives it towards long on for a 4.
4 for Shubham after some time. It was an easy picking. 2 full and Nasir Loan guides. Sorry, Shubham Khajuria guides it towards long on. Boundary for a 4. Khajuria. Brilliant display of batting this. Now I'm handing my mic to my fellow commentator Zahid. 141 स्कोर है जम्मू की टीम का। अच्छी पोजीशन में जम्मू की टीम। नासिर लोन एक और ओवर के साथ कमेंट्री बॉक्स एंड की जाने से शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद डाली थी, इस मरतबा जो है जाने दिया विकेट कीपर के लिए। बिल्कुल जो है कैचिंग पोजीशन में 2 खिलाड़ियों को रखा गया ऑन साइड में। डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब जो है बाउंड्री लाइन से चिपके हुए हैं और इसी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट गेंदें जो है कर रहे हैं नासिर लोन। शुभम खजूरिया सामना करेंगे नासिर की गेंद का। नासिर चले, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद दिफाई अंदाज के लिए। और शुभम खजूरिया की अगर बात की जाए तो टेम्परामेंट जो है उनके पास काफ़ी अच्छा है और उनको पता है कि किस गेंद पर जो है कौन सा स्ट्रोक खेलना है। जब भी अच्छी गेंद स्टम्प्स में आती हैं तो पूरे सम्मान के साथ जो है खेलते हैं उन गेंदों को, और जब भी कोई ख़राब गेंद मिलती है तो पूरा जो है उसको पल्ला खोल कर जो है स्वागत करते हैं शुभम खजूरिया। राउंड द विकेट आप गेंदबाजी करने के लिए नासिर लोन चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी, फिर से स्टंप्स में आती हुई गेंद को स्टाइलिश अंदाज में खेले, लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। एक और नो बॉल नासिर लोन की जानिब से। काफी मर्तबा जो है अपनी लाइन और लेंथ से चूके हैं अब तक नासिर लोन। नासिर गेंद करेंगे शुभम खजूरिया। 142 स्कोर है, एक खिलाड़ी के नुकसान के जम्मू की टीम इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है। और फिर गेंद, इस गेंद को निकाल दिया है गैप में। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे, देखना होगा रोक पाएंगे या नहीं। बिल्कुल जो है बाउंड्री लाइन के करीब जो है रोकने में कामयाब हो गए और इस असना में तीसरा रन भी जो है मुकम्मल कर लिया है दोनों बल्लेबाजों। सिर्फ 1 रन दूर शुभम खजूरिया अपनी अर्धशतक से उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है शुभम खजूरिया ने। क्या बल्लेबाजी देखने को मिली है शुभम खजूरिया, और उसका आप जो है साथ दे रहे हैं हनान मलिक। और इससे पहले सुरनेश रैना जो है उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था, उन्होंने भी गालिबन 73 रन बनाए थे अपनी इनिंग्स में। सुरनेश रैना ने 114 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी एस रैना और शुभम खजूरिया के दरमियान। 25 ओवर्स के इख्तिताम पर 149 एक खिलाड़ी के नुकसान के। मजीद 27 रन से इस वक्त जो है ट्रायल कर रही है जम्मू की टीम। ऑन साइड में खेले और अपनी अर्धशतक जो है मुकम्मल की है शुभम खजूरिया ने, और 150 रन भी जो है मुकम्मल किए हैं जम्मू की टीम। क्या उम्दा और काबिल तारीफ बल्लेबाजी शुभम खजूरिया की जानिब से। पहले ओवर में इनकी बैटिंग जो है देखकर काफी मजा आ रहा था और सॉलिड बैट्समैन है। और पहले तकरीबन 5-6 ओवर्स जो है सिर्फ जो है अपनी नजरें जमाई थी शुभम खजूरिया ने, और दूसरे साइड से रन्स अच्छी तरह आ रहे थे। सुरनेश रैना जो है काफ़ी जाहिराना मूड में उस टाइम थे, तो सिर्फ जो है अपनी नजरें जमाई थी शुभम खजूरिया ने, और बाद में जो है रन्स बनाने शुरू कर दिए। एक और रन मिलता हुआ जम्मू की टीम को 151। शुभम खजूरिया जो है अब स्ट्राइक पर आ गए, 50 रन पर नाबाद है।
176 रन पहली इनिंग्स में बनाए थे कश्मीर की टीम ने, और उसके ताकुब में अब तक 151 रन जो है बोर्ड पर लगा दिए हैं जम्मू की टीम ने। सिर्फ एक खिलाड़ी के नुकसान। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा जम्मू के बल्लेबाजों की जानिब से। शाहरुख डार शोर में अगली मरतबा आए, ऑन साइड की जानिब धकेला, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन पीछे एक खिलाड़ी मौजूद है। पहला रन तेजी के साथ हासिल किया और दूसरा रन लेने के लिए भी जो है दोनों बल्लेबाज निकल चुके हैं, और 2 रन जो है इस असना में हासिल कर लिए हैं दोनों बल्लेबाजों। कश्मीर की टीम जो है मुश्किलात में लग रही है इस वक्त। इस लाइव नशरियात को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर से बराह रास्त आप मुकाबला देख रहे हैं। शाहरुख डार इस ओवर में अगली मरतबा पटकी हुई गेंद, और इस गेंद को दिफाई अंदाज से खेले। JKCA सीनियर मल्टीडे फाइनल 3 दिनों का मुकाबला होगा। गवर हाजनी इशफाक भट्ट, राशिद अहमद, यावर भट्ट, एन खान, एहसानुल्लाह बानीपोरा से हमारे साथ जुड़े हैं। आउट होने वाले वाहिद बल्लेबाज जम्मू की जानिब से सुरनेश रैना 73 रन बनाकर शिकार हुए थे नासिर लोन का। नासिर लोन ने जो है 53 रन की आज एक बेहतरीन इनिंग्स भी खेली है, और अपनी टीम को जो है एक वाहिद विकेट जो है अब तक गिरी है वो नासिर लोन ने ही दिलाई। शाहरुख गेंद को हल्के हाथ से खेला, रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड से मना कर दिया हनान मलिक ने। खूबसूरत ग्राउंड शेर कश्मीर का, लश ग्रीन आउटफील्ड, और यहाँ खेलना जो है काफ़ी क्रिकेटर्स का ख्वाब है, और कश्मीर में बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं दिन रात ही सपना देखते होंगे कब जो है वो इस ग्राउंड में आए और अपने हुनर का जो है मुजाहरा कर सके। कश्मीर का सबसे खूबसूरत ग्राउंड अगर वाकई में कोई है तो वो शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर है। लेकिन एक बात जो है जो मुझे इस मैच में आज सही नहीं लगी, ये है कि क्राउड को जो है अलाउड नहीं किया गया, और क्राउड के बगैर जो है मज़ा नहीं आता है क्रिकेट में। क्राउड होता तो और भी जान जो है आती इस मैच में, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से जो है JKCA ने जो है क्राउड को अलाउड नहीं किया है ग्राउंड के अंदर। एक 153-26 और उसके इख्तिताम पर एक विकेट जो है गिर चुकी है जम्मू की टीम। आदिल एजाज अहमद डाई हार्ट फैन हैं आदिल खासरू के, इशफाक भट्ट, एजाज, रसूल, वाहिद, भट्ट रशीद, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुजारिश यही रहेगी कि इस लाइव नशरियात को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ जो है और भी लोग इस बेहतरीन मुकाबले का घर बैठे आनंद ले सके। जम्मू बनाम कश्मीर ये मुकाबला इस वक्त जारी है। JKCA सीनियर मल्टीडे फाइनल 3 दिनों का मुकाबला होगा। पहले दिन का खेल इस वक्त जारी है और अब तक जो है ये खेल बिल्कुल जम्मू के नाम रहा है। 176 पर पूरी टीम जो है सिमट गई थी कश्मीर की, उसके जवाब में अब तक 153 रन बनाए हैं और सिर्फ जो है एक विकेट अब तक गिरी है जम्मू की टीम। इम्तियाज गनाई को अब लाया गया है स्पिन अटैक, लेकिन खासा जो है प्रभावित नहीं किया है स्पिन बॉलर्स ने अगर कश्मीर की बात की जाए। दिफाई अंदाज से इस गेंद को खेले हनान मलिक, लेकिन अगर बात की जाए जम्मू की जानिब से तो आबिद मुश्ताक ने जो है तबाहकुन गेंदबाजी की थी, 6 विकेटें हासिल की अपनी गेंदबाजी में और एक हैट्रिक भी जो है अपने नाम की थी। अच्छी गेंद थी, स्टंप में आती हुई इस गेंद को दिफाई अंदाज से खेले, खुशकिस्मत रहे आखिरी लम्हात में जो है अपना बल्ला नीचे किया था हनान मलिक ने। अच्छी पार्टनरशिप जो है अब बिल्ट हो रही है हनान मलिक और शुभम खजूरिया के दरमियान। 114 रन बनाए थे पहली विकेट पर
शुभम खजूरिया और सुरनेश ने। एक और दिफाई अंदाज से स्ट्रोक हनान मलिक की तरफ से। गालिबन जो है इस ओवर के बाद परवेज रसूल जो है शायद एक्शन में दिखेंगे। इम्तियाज गनाई इस ओवर में अगली मरतबा फ्लाइटेड गेंद, स्ट्रोक मारने की कोशिश जरूर की थी लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए इस मरतबा हनान मलिक। आबिद मुश्ताक का ताल्लुक जो है बदरवा से है, जो कि जम्मू डिवीजन में आता है, और क्या गेंदबाजी का मुजाहरा किया है आज आबिद मुश्ताक। सिंगल हैंडेडली जो है आबिद मुश्ताक ने कमर तोड़ दी थी। अगर कश्मीर के बल्लेबाजों की बात की जाए, 6 विकेटें लेना जो है आसान काम नहीं होता है, और एक हैट्रिक भी जो है उनको मिली थी। और अगर कश्मीर की तरफ से जो है बात की जाए, काफ़ी मंजे हुए प्लेयर्स जो हैं उसमें शामिल थे। फाजिल रशीद, कामरान इकबाल, याद मागरे, जमान कुयूम और परवेज़ और नासिर लोन जैसे जो हैं बड़े बड़े नाम जो हैं कश्मीर की तरफ से ये मुकाबला खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आउट क्लास किया अपनी बॉलिंग से आबिद मुश्ताक ने। शार्क डार को कंटिन्यू रखा गया था। मुझे लगा शायद जो है परवेज रसूल को लाया जाएगा, लेकिन परवेज रसूल जो है को नहीं लाया गया। शाहरुख डार आए, शॉर्ट गेंद बीट हुए इस मरतबा खेलने की कोशिश की थी शुभम खजूरिया ने। विकेट्स की तलाश में कश्मीर की टीम। 153 एक खिलाड़ी के नुकसान के स्कोर है जम्मू की टीम का। शुभम खजूरिया अपनी अर्धशतक मुकम्मल कर चुके हैं। सामना करेंगे शाहरुख डार की गेंद पर। शाहरुख चले, इस गेंद को खेले हल्के हाथ से ऑन साइड की जानिब। शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। महराजदीन, इरशाद अहमद नजार, संजीव कुमार, संजीव ठाकुर, इशफाक भट्ट, एजाज अहमद भी जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबका खैर मकदम। 3 डेज मैच इस वक्त जारी है। जम्मू बनाम कश्मीर। कश्मीर की पहली इनिंग्स जो है 176 रन पर जो है उनकी पूरी टीम जो है सिमट गई थी। आबिद मुश्ताक की तबाहकुन गेंदबाजी की वजह से जो है सिर्फ 176 रन बना पाई कश्मीर की टीम अपनी पहली इनिंग्स। उसके जवाब में अब तक जो है उम्दा बल्लेबाजी देखने को मिली है। एक और बेहतरीन स्ट्रोक शुभम खजूरिया की जानिब से, आसानी के साथ जो है 2 रन हासिल होंगे। क्या बल्लेबाजी जो है देखने को मिली है शुभम खजूरिया की जानिब से। और फिर से मैं बताना चाहूँगा, शुभम खजूरिया जब जो है खेलने के लिए आए थे, पहली ओवर से जो है उनके दिफाई स्ट्रोक को देखकर जो है इस बात का जो है अंदाज़ा लग गया था वो टच में है। क्या उम्दा बल्लेबाजी जो है देखने को मिली है उनकी जानिब से। एजाज अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। ऐसे ही अपना प्यार जो है हमें देते रहेगा, और भी प्यार जो है देने के लिए आप जो है इस लाइव नशरियात को शेयर कीजिएगा, और स्टार्स भी जो हैं अगर आप भेजना चाहते हैं तो आपका दिल से जो है स्वागत है। तो मोहसिन भाई, क्या लग रहा है अब तक के जो खेला गया है अब तक, इसमें जो है क्या प्रॉब्लम हुई है कश्मीर की जानिब से? जो कश्मीर की टीम है, क्या प्रॉब्लम अब तक जो है आपको लगी है उनकी टीम की जानिब से जो है वो कोलैप्स उनकी बैटिंग हुई थी? Thank you, Zahid. Actually, I think the Kashmiri batters were in a bit hurry, which is always the case with our batters. And I won't blame them much because the most of the cricket they play is T20 formatted, and they are not used to playing longer version of the game. But nonetheless, they could have done better. 176 on a flat wicket like this is unacceptable, to say the least. It is no way a competitive total, as you can see how comfortably Jammu batters are batting. They have crossed the 150 mark a long ago, and they are now reaching towards the 176 run mark to earn the lead. Bowling also has been a bit ordinary so far.
Not much can be blamed on bowlers because there is nothing in this pitch. It's as flat a pitch as you can get. The day's play is probably going to end at 5, I guess. It could be at 4:30 as well, but we don't have a confirmation yet. But I believe it will end at 5 because there was late start. It started at 9:30. Jammu batters are playing with Kashmiri bowlers with no trouble whatsoever. Yudhvir continues from this end. Now there is some change in the field. Yudhvir has asked for a silly point. Let's see what he has in his pocket. Will he try something different here? Let's see. Up again is Shubham Khajuria. Khajuria. Oh, what a shot! Lifted over long off boundary for a big 6. Beautifully played by Shubham Khajuria. He has been in some touch. What a shot that. Brilliant batting that. It was an over pitch delivery and he lifted it over long off boundary for a 6. Brilliant batting from Shubham Khajuria. He is making most of his experience. Again as Yudhvir, who comes in again and bowls it a bit flat this time. Defended well by Shubham Khajuria. Shubham has played some fantastic shots. Not just Shubham, all the Jammu batters so far looked impressive. He played good shots. Again, flighted delivery which Shubham defends, gets a single. Inan Malik now on strike will face Yudhvir. Yudhvir has looked out of sorts, hasn't bowled at the right areas, has lacked consistency in his bowling so far. Now the silly point fielder has moved to short leg. In comes Yudhvir, bowled it at legs. Way too wide for Inan Malik to offer a shot. Inan leaves it alone. Yudhvir once more to Inan Malik. Seems like he is trying to trap him around the legs. That's why there is a short leg. Driven beautifully. What a shot. These guys are playing some shots today. This was driven towards cover boundary for 4. Making it look easy. This was an extraordinary shot, but the way Inan played it, it looked like it was just another shot, but it takes some gut to play this shot. Up again as left arm spinner, whose ball usually goes away from the wicket. Once again Yudhvir bowls it, defends Inan, defends it comfortably. Another over comes to an end. 168 is the score. Jammu has lost only 1 wicket. They are only trailing by 10 runs with 9 wickets in hand. Does it mean that Kashmir has already been thrown out of the match? Well, let's see. Cricket is a game of great uncertainties. You can never say anything. Bravo. Score is 167. For the loss of 1 wicket. The only wicket to fall was Suryansh Raina, who made around 72 runs. Now Umar Nasir, who opened the bowling attack for Kashmir, has come back to bowl. Will bowl his second spell from the city end. He started off from commentary box end, but now he has changed his ends. Let's see if it bears any results for him. Umar Nasir will bowl to well set and experienced campaigner Shubham Khajuria. Khajuria up again as Umar Nasir with
the long run up. Bowls it on the legs and there's a fumble in the field, allowing Shubham to get a single. Shubham had driven it towards mid-wicket, where the fielder fumbled it, allowing him to get a single. Nasir for the second time in this over. It's a very long run-up. Will now bowl to Hinan Malik. He has played some good shots so far. Nasir is working on the ball, trying to shine it, get some movement off the air. Nasir for the second time runs in, crosses the umpire, bowls it on the legs, comfortably defended by Hinan Malik. Same as like the Kashmir bowlers are in here for a long toil. Jammu batters aren't going to make it easy for them. They won't leave their wickets. They won't throw it away like the Kashmiri batters did. You will have to earn those wickets. They are not going to give you that. Now Nasir once more. Balls are too full. It was a Yorker length delivery, which now again defended easily. Nasir for the fourth time in this over. Malik defends it again without much trouble. How do Kashmir now get wickets? What do they bowl? Should they stick to good length or try something different? Nasir Lone and Fazil Rashid having a conversation. They must be talking about how to get one of these two. Nasir once more comes in, balls it full. Oh, what a shot that! Again, twisted towards mid-wicket boundary for another four. Hinan Malik with another boundary. Now, my fellow commentators, I have to bring more to you. शुक्रिया मोहसिन भाई। 171 जो है स्कोर पहुंच चुका है। सिर्फ 5 रन दूर हैं जो कश्मीर ने जो स्कोर बनाया था 176 रन का, उससे सिर्फ 5 रन दूर हैं। उसके बाद जो है जितने भी ज़्यादा रन जो हैं बना पाएंगे उतने जो है कश्मीर की टीम के लिए फिर जो है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर 150-200 के करीब जो है लीड लेने में पहली इनिंग्स में कामयाब हो गए, जम्मू की टीम तो शदीद मुश्किलात में जो है फंस सकती है कश्मीर की टीम। एक और ओवर इख्तिताम पजीर 171 एक खिलाड़ी के नुकसान के स्कोर हैं जम्मू की टीम का। हिनान मलिक और शुभम खजूरिया इस वक्त जो हैं बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों प्लेयर जो हैं काफ़ी सेटअप लग रहे हैं। अभी भी जो है सरप्राइजिंगली परवेज रसूल को जो है दूसरा स्पेल नहीं दिया गया है। परवेज रसूल जो है दूसरे स्पेल के लिए अभी तक नहीं लगाए गए हैं। इम्तियाज गनाई अब कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से उनके सामने शुभम खजूरिया। 171 स्कोर है 30 ओवर्स के इख्तिताम पर। सिर्फ एक विकेट जो है अब तक गिरी है जम्मू की टीम। इस गेंद को खेले वापस इम्तियाज गनाई ने अपनी गेंद पर खुद फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 171 एक खिलाड़ी के नुकसान के। इम्तियाज चले इस गेंद को हल्के हाथ से ऑन साइड की जानिब धकेला। खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं।
171, एक खिलाड़ी के नुकसान की। बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त जारी है शुभम खजूरिया की। बाहर निकलकर इस गेंद को मारा, लेकिन इस मर्तबा जो है पीछे खिलाड़ी मौजूद है। बड़ा स्ट्रोक मारने की कोशिश में लग रहे थे, लेकिन बल्ले से जो है गेंद सही तरह से नहीं लगी थी और नाखुश भी लग रहे हैं शुभम खजूरिया। 172। हनान मलिक अब स्ट्राइक पर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। शॉर्ट गेंद कट किया, उमदा स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के पीछे, देखना होगा रोक पाएंगे या नहीं। गेंद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। हनान मलिक के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। बेहतरीन बल्लेबाजी हनान की तरफ से भी जो है देखने को मिली है। 1 रन लीड अब ले लिए हैं जम्मू की टीम। 177 पर पहुंचे जम्मू की टीम, यानी कि 1 रन की लीड जो है अब हो गई है। अब जितना भी और स्कोर जो है जोड़ेंगे जम्मू के बल्लेबाज, वो जो है और प्रेशर में लाएगी कश्मीर की टीम को। देखना होगा कितना जो है लीड लेने में कामयाब होगी जम्मू की टीम। उमदा स्टाइलिश अंदाज में, दिफाई अंदाज में जो है इस गेंद को खेले थे हनान मलिक। स्टाइलिश प्लेयर है और काफी टच में लग रहे हैं हनान मलिक। पूरा साथ दे रहे हैं अब तक शुभम खजूरिया का। इम्तियाज गनाई इस ओवर में अगली मरतबा। सामने हनान मलिक, एक और मरतबा जो है दिफाई अंदाज से खेले हनान मलिक। और खत्म हुआ इम्तियाज गनाई का। 177 एक खिलाड़ी के नुकसान के स्कोर है। अब जो है विदाउट प्रेशर खेल सकती है जम्मू की टीम, क्योंकि अब जो है लीड लेने की कोशिश में लगे हैं। 1 रन जो है ऑलरेडी लीड ले चुकी है जम्मू की टीम। उमर नजीर हमारे अपोजिट एंड से, उनके सामने शुभम खजूरिया उनका सामना करेंगे। दोनों अंपायर जो हैं कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। लाइट शायद एक अहम फैक्टर होगा, क्योंकि आसमान पर जो है इस वक्त काले बादल जो है मंडरा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है लाइट का भी इशू हो सकता है। फरकान नबी, एन खान, तारिक अहमद, एजाज अहमद, राफी, रोहेल बांडे, शाहिद बशीर के साथ एजाज अहमद और इशफाक बड़वी जो है इस वक्त मुकाबला देख रहे हैं। उमर नजीर अब नए गेंदबाज रन लेने के लिए निकल पड़े। फील्ड सही तरीके से वहां पर नहीं कर पाए। शायद जो है वहां पर चांस क्रिएट हो सकता था अगर सही तरीके से फील्डिंग की होती वहां पर खड़े खिलाड़ी ने। 178 जम्मू का स्कोर, यानी कि 2 रन जो हैं लीड हो चुकी हैं जम्मू की। मल्टी डे सीनियर मल्टी डे फाइनल जम्मू बनाम श्रीनगर, जम्मू बनाम कश्मीर श्रीनगर के शेरी कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त जारी है। शॉर्ट गेंद कट किया, उमदा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने गेंद को कट किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने जो है चहलकदमी के साथ 1 रन हासिल कर लिया। शुभम खजूरिया अब जो है स्ट्राइक पर। $179 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पूरी तरह से जो है आउट क्लास किया है अपनी बॉलिंग से भी और अपनी बैटिंग से भी आज जम्मू की टीम ने कश्मीर की टीम को। इस पूरे मैच में सुबह से ही जो है छाई हुई लग रही है जम्मू की टीम। काफी ज्यादा प्रेशर इस वक्त जो है क्रिएट हो रहा होगा कश्मीर की टीम पर, क्योंकि अब जो है जितनी ज्यादा लीड लेगी जम्मू की टीम, उतना ज्यादा प्रेशर जो है क्रिएट होगा कश्मीर की टीम पर। और अभी जो है पहले ही दिन का खेल है,
अभी भी जो है 2 दिनों के खेल जो है अभी खेलना जो है बाकी है, 2 दिनों का खेल बाकी है। तो एक अच्छी और मजबूत पोजीशन में इस वक्त लग रही है जम्मू की टीम। उमर आई गेंद की, इस गेंद को हल्के हाथ से खेले, शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 4:36 गालबन 5 बजे जो है पहले दिन का खेल जो है इख्तिताम पजीर होगा। उमर नजीर अपने बॉलिंग मार्ग पर पहुंचे, लंबे रनअप के साथ उमर नजीर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की पटकी हुई गेंद डक किया और जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के लिए शुभम खजूरिया ने। 1 शॉट का जो है इशारा कर दिया अंपायर ने उमर नजीर को। वन 179, 3 रनों की लीड ले ली है जम्मू की टीम ने। मुख्तलिफ खिलाड़ियों के जरिए बॉल वापस पहुंच रही है उमर नजीर के हाथ में। अपने बॉलिंग मार्ग पर पहुंचे उमर नजीर, दौड़ना शुरू किया, उनकी रफ्तार तेज हुई, सामने शुभम खजूरिया, एक और पटकी हुई गेंद, इस मरतबा जो है गली की जानिब गेंद को हल्के हाथ से खेला था और तेजी के साथ 1 रन हासिल कर लिया। 180 स्कोर है। 4 रनों की लीड ले ली है जम्मू की टीम ने। पहले दिन का खेल जो है आखिरी लम्हात में इस वक्त पहुंच चुका है। अभी भी जो है परवेज रसूल को नहीं लाया है फाजिल रशीद, कैप्टन है कश्मीर की टीम की जानिब से आज फाजिल रशीद। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको जो है हम बताता चले कि आज सुबह जो है पहली बैटिंग जो है कश्मीर की टीम ने की थी और 176 रन का एक कम स्कोर जो है बनाया था कश्मीर की टीम ने। कश्मीर की जानिब से नासिर लोन ने 53 रन की अच्छी इनिंग्स खेली थी और जम्मू की तरफ से अगर बात की जाए तो आबिद मुश्ताक ने 6 विकेटें ली थी और हैट्रिक भी जो है अपने नाम की थी अपनी बॉलिंग में। 176 रन के बाद जो है अब जम्मू की टीम जो है बैटिंग कर रही है। 180 ऑलरेडी बोर्ड पर लग चुका है, सिर्फ एक खिलाड़ी के नुकसान के। 73 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली है सुरनेश रैना ने और 50 रन जो है मुकम्मल किए हैं शुभम खजूरिया ने और उनका जो है भरपूर साथ दे रहे हैं हनान मलिक। सैद बॉलिंग करने के लिए अब लगाए गए हैं। अभी भी जो है परवेज रसूल को जो है बॉलिंग करने के लिए नहीं लाया गया है, अनएक्सपेक्टेड। 180 एक खिलाड़ी के नुकसान के स्कोर हैं जम्मू का। उसैद इस ओवर में अगली मरतबा बाहर निकलकर इस गेंद को खेले ऑन साइड की जानिब। खिलाड़ी गेंद के पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं, रोक पाएंगे या नहीं देखना होगा, नाकाम हो गए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। शुभम खजूरिया के बल्ले से एक और चौका लगता हुआ 70 पर नाबाद है। 184 कुल स्कोर जम्मू की टीम का। उसैद इस ओवर में अगली मरतबा चले, बाहर निकलकर बड़ा स्ट्रोक मारने की कोशिश, इस मरतबा जो है बल्ले से गेंद जो है सही तरह से नहीं लगी थी। सिर्फ 1 रन जो है मिलेगा दोनों बल्लेबाजों। 185, 9 रनों की लीड। उसैद अब गेंदबाजी करेंगे हनान मलिक को। हनान भी जो है बेहतरीन टच में लग रहे हैं आज, पूरा साथ दिया है शुभम खजूरिया का। उसैद चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट की जाने, पीछे खिलाड़ी मौजूद। सिर्फ 1 रन बनने का जो है मौका दोनों खिलाड़ियों के पास।
अब शुभम एक मरतबा फिर जो है स्ट्राइक पर वापस आए, सामना करेंगे उसैद की। इस ओवर की अगली गेंद पर उसैद चले 4-5 कदमों के रनअप के साथ। इस गेंद को खेले, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं था। उसैद इस गेंद को हल्के हाथ से ऑन साइड की जानिब धकेला और तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन हासिल किया और खत्म हुआ उसैद का 187 एक खिलाड़ी के नुकसान के। लीड जो है अब और बढ़ाने की कोशिश में हाफिज तारिक, मुजीबुर रहमान, जुनैरा इजाज, फुरकान नबी, एन खान, तारिक अहमद, एजाज अहमद और ओजिल राफी के साथ रोहेल बांडे, शाहिद बशीर और एजाज अहमद भी जो है मुकाबला देख रहे हैं। सबका जो है तहे दिल से खैर मकदम, और इस लाइव नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो है आपके साथ साथ घर बैठे ये मुकाबला देख सके। अगले कुछ ओवर्स का रहमत तबसरा मोहसिन कमाल की जुबानी। There's some drizzle here at Kashmir Stadium, Srinagar. It might soon impact the game. The umpires might call up today's play, but let's see. So far, there has been no such signal. Umar Nasir bowling from the stand. After the opening partnership between Suryansh, Raina and Shubham Khajuria, now Shubham Khajuria and Hanan Malik are putting on a partnership. Hanan Malik on strike now. Umar Nasir comes in with a long runner, bowls it. Oh, beautifully driven. What a shot that, but was fielded well at the covers by Gulzar. A drizzle has started to get harsher. Hanan Malik at the crease now. Umar Nasir will bowl for the 4th time in this over. Comes in with a long run up. Oh, bowls a short delivery, but it is way too short for Hanan. Called wide. The square leg umpire declared it wide. Well, it was way above the batsman's head. If you have to bowl a bouncer, it should be in the line of a batter's body. If it is way too high, you are gonna get the penalty in likes of a wide. Now Umar Nasir once more to Hanan Malik, bowls it short. Hanan Malik tries to drive it, but it hit his. It didn't come off the middle of the bat, meaning no run added to the total. Hanan Malik has played some good shots in his stay at the crease so far. Now Umar Nasir once more bowls it full. This time Hanan tries to drive it, but was comfortably fielded at the mid-off by Parvez Rasool. Umar Nasir has to do something here. Make most of this drizzle. Maybe pamper Hanan Malik with a couple of short balls. But let's see how he responds. Umar Nasir once more in this over. Will bowl to Hanan Malik. Bowls it short as I expected. It's a good short delivery. Hanan Malik tried to pull it, but it wasn't in the line of the ball. Missed him by far. Umar Nasir walking back slowly. The score moves to 189 for the loss of 1 wicket. The lone wicket to fall was Suryansh Raina, who made 72.
Nasir Lone was the only wicket taker. Has been the only wicket taker for Kashmir side so far. Now Umar Nazir once more in this over will bowl to Hinan Malik. Comes in, bowls it full. Hinan tries to drive it, but it wasn't there to drive. Hands it to the mid-on fielder Sharukh Dar, who fields it comfortably. No run again. Sheikh Usaid, the part-timer, will continue to bowl from the commentators, and yes, both batters have looked brilliant. They are both in good touch. More so Hinan Malik. Shubham Khajuria has been playing for a very long time. From under 19 days he has been serving J&K. He has tons of experience under his belt, and he is making most of it here against Kashmir in this big JKCA senior multi-day final. Sheikh Usaid, that the part-timer, the orthodox off-spinner, will continue from commentators, and there has been a few changes to the field. There's square leg now. Usaid once more bowled at the legs. Khajuria tried to sweep it, but it wasn't there. It was bowled B2 on the leg stump. Now he will bowl from around the stumps. Comes in, bowls it on the legs, and Shubham Khajuria defends it comfortably. Khajuria has looked unmoved. None of the bowlers have troubled him. Actually, there's nothing in this wicket, and it was ordinary display of batting by Kashmir batters. Again, defended easily. These are last few overs of the day. Will Khajuria and Hinan return back unbeaten, or Kashmir gets a wicket? What do you think? Tell us in comments. What do you make of this? Will there be any more wickets, or both Shubham Khajuria and Hinan Malik will return back unbeaten? Usaid bowls it quick, and what a shot that! Brilliant fielding in by Sharukh Dar at the point. It was driven very hard. Looked like it will get Khajuria 4 runs, but it didn't. Sharukh Dar stayed between boundary and Khajuria. Sheikh Usaid keeps on changing his ends. He will now bowl over the stump to Hinan. There's a little drizzle. Usaid to Hinan. Hinan plays it comfortably for a single towards mid-wicket. Javed, who is substitute fielder, fielded the ball. Parvez Rasool has now been handed the ball. Can he get Kashmir a wicket? He must. If Kashmir has to stay in the game, they will need to take at least 1 wicket today. The score reads 190 for 1. Some changes in the field for Parvez Rasool. Parvez Rasool would be aiming to get a wicket here. He desperately needs to take a wicket, because if both Hinan and Shubham return unbeaten today, it will be very hard for Kashmir to get back into this game tomorrow. Let's see what is in the store now. Parvez Rasool setting the field with 2 slips for the right-hander, Hinan Malik. Hinan Malik bowled beautifully, but defended as good by Hinan. The Kashmir side made only 176 runs, and Parvez Rasool once more in this over. Bowls it flat. Oh, there was a bit of drama out there. The ball was about to hit the stumps, but Hinan Malik got back to it in time and managed to get it away. Parvez Rasool once more in this over will bowl to Hinan Malik.
Hinan Malik tried to steal a single there, but it wasn't on offer there. Parvez Rasool in this over. Balls at fuller. And Hinan leaves forward and defends it back to the bowler. Now Parvez Rasool once more. Hasn't looked impressive in this over so far. Has been outplayed by the batters easily. Again bowled at legs and Hinan Malik easily steals a single there. There was gap between the two fielders and he put it just in between them to get single to the total. The score now is 191 for the loss of 1 wicket. Shubham Khajuria, who is playing in 70s, will now face Parvez Rasool. Bowled a bit quick, but Shubham Khajuria defends it. Will this be the last over of the innings? No, I don't think so. JKCA will continue from the other end. There's a bit of drizzle continuing, but not heavily. It's not raining yet. A bit of drizzle only, meaning that the play continues. JKCA now from the commentators end will bowl to Hinan Malik. JKCA also making some change to the field. Brings in the long on fielder to the mid on. There's square leg, there's mid wicket. Now comes in JKCA, will bowl to Hinan. Hinan defends it comfortably. No trouble there. JKCA bowling his slow off spin. He's a part-time bowler. Will bowl to Hinan once more. Bowled full and Hinan tries to drive it, but there's a fielder who stopped the ball and Hinan will only get 1 run. Now Shubham Khajuria will face Usaid for the 3rd time in this over. Coming from commentate box and Usaid. Slow. Oh, the ball had kept low. Almost got the wicket of Khajuria, but was lucky there. It was bowled on the 5th stump. Had it been in stumps, Shubham Khajuria might have had to return. Once more time balls. Oh, he gets him. Wow, this is some celebration from Usaid. He gets the big man, Shubham Khajuria. The earlier ball had kept low, but it was bowled at the 5th stump and Khajuria somehow survived it. But this ball was bowled in the stumps and it again kept low and rattled the stumps of Shubham Khajuria, who played a great knock of around 80 runs. A big wicket for Kashmir at the brisk of first day's play. Khajuria returning back. He must be disappointed. He would have wanted to score 100 here, but it wasn't there for him. Was undone by a slow ball that kept a bit low. JKCA, who celebrated it in some style. A big wicket indeed. Khajuria walking back. As they say, part-time bowlers are always dangerous. You never know what they will bowl, and that's how Khajuria lost his wicket. He had no idea what Usaid will bowl, and he survived the ball prior to it. Now Shubham Pundir walks in, the skipper. Pundir has been captaining the side for quite a while. He even captained in Ranji Trophy and other two, Vijay Hazare and Saeed Mushtaq Ali Trophy as well. But his record hasn't been that good. He has struggled lately, but has been continuing to be part of the team, which sometimes surprises people. No doubt about his potential, but he hasn't been able to convert it at the highest level. JKCA once more in this over. Will he get another wicket, or will Pundir and Hinan see him through? Oh, very first ball, drives it hard, but well fielded there. Was cut off by fielder Javed.
Ganai. Sheikh Hussain once more will bowl to Shubham Punder, the captain of Jammu side. Again driven beautifully but straight to the fielder. Every Jammu batter who is coming to the crease is playing with ease. It's because they know they have already got the lead. They have nothing to lose now. They will be enjoying themselves. But they must keep in mind that they have to put on a huge lead, because you never know how Kashmir side will respond in the second innings. Parvez Rasool from the city end. Parvez will also be now aiming for a wicket, and the wicket of Hinan Malik, who has looked dangerous. Parvez Rasool has to take a wicket or two here. Let's see if he does or not. Will bowl to Hinan Malik. Hinan Malik goes to back foot and plays it handsomely for a 4. Beautiful shot that was put between cover and point fielder and got him another 4. The score now moves to 196 for 2. Beautiful batting display this by Hinan Malik. He doesn't leave any opportunity to score boundaries whenever he finds one, and he lashes onto it. Parvez Rasool once more in this over. Misses his run up. No, asks the short leg to go a yard back. Hinan Malik once more will face Parvez Rasool. Comes in, bowls it at the legs. Parvez Rasool once more in this over, bowls it full, and Hinan tried to drive it but wasn't successful this time around. A dot delivery. Parvez Rasool will continue. The score is 196. The lead is 20 runs. Parvez Rasool, almost got him there. The ball again kept a bit low, and Hinan tried to cut it. It was not there to cut. Now it seems that there is something in the wicket after that little drizzle. The ball is keeping low. The score is 196 for 2. Parvez Rasool once again bowls it to the legs, and Hinan somehow defends. Hinan Malik will continue to face Parvez Rasool in this over. Parvez from the city end comes in, bowls it full. Hinan defends it handsomely. Another over comes to an end. There seems to be some low bounce on the track now, because the drizzle might have made the track a bit wet. That's why the ball is keeping low. शुक्रिया मोहसिन भाई. 196 स्कोर. 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर दोनों ओपनर्स वापस जा चुके हैं. और सैद ने जो है विकेट दिलाई थी शुभम खजूरिया की, जब सभी मैन बॉलर जो हैं फेल हो गए. उसके बाद एक पार्ट टाइम बॉलर उसैद ने जो है एक बड़ी विकेट दिला दी है कश्मीर की टीम को. 20 रन लीड है ऑलरेडी जम्मू की टीम. 50 स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग. गालबन आखिरी ओवर होगा आज के दिन का, क्योंकि 4:59 जो है हो चुके हैं. गालबन आखिरी ओवर इस पहले दिन का दिफाई अंदाज से खेले. शुभम पंडिर कैप्टन है जम्मू साइड के. 196 स्कोर, 20 रन की लीड जम्मू के पास ऑलरेडी है. बॉलर आए, बाहर निकलकर बड़ा स्ट्रोक और ग्राउंड से बाहर 6 रन के लिए. बिल्कुल जहां पर हम कमेंट्री कर रहे हैं उसी साइड में ये गेंद आई थी. बड़ा छक्का शुभम पंडिर का. 200 रन जो हैं पार हो गए हैं. 202 स्कोर जो है बन चुका है जम्मू का. छब्बीस रन की लीड जम्मू के पास. अब बॉलर चले इस ओवर में अगली मरतबा. एक और फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन इस मरतबा जो है दिफाई अंदाज से खेले. आखिरी ओवर जो है लगभग इस पहले दिन का जारी है इस वक्त.
उसैद चले, इस गेंद को खेले, एज लगा, कैच ड्रॉप और गेंद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। गालिबन परवेज रसूल जो है पहली स्लिप पे खड़े हैं और उनके बाएं जानिब जो है गेंद तेजी के साथ निकल गई और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के। 206 30 रन की लीड जम्मू के पास जो है पहुंच चुकी है। स्लिप पर इस वक्त जो है परवेज रसूल थे और एज लगा था, कोशिश जरूर की थी परवेज रसूल ने, लेकिन उनकी पहुंच से गेंद दूर थी और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस गेंद को खेले वापस बॉलर की जानिब, बॉलर ने फील्ड किया और खत्म हुआ और इस तरह से जो है पहले दिन का खेल इख्तिताम पजीर। 206 स्कोर बनाया है जम्मू की टीम ने, यानी कि 30 रन की जो है लीड है अब जम्मू के पास। उम्दा बल्लेबाजी जो है देखने को मिली है जम्मू के बल्लेबाजों की तरफ से। शुभम खजूरिया, सुरनेश, रैना और उसके बाद जो है इस वक्त हनान मलिक और शुभम पंडिर जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों टीम जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वापस आ रही है। और कवर भी जो है बिल्कुल तैयार रखा है क्योंकि हल्की हल्की जो है बारिश हो और कवर भी जो है अब लाया गया है। तो उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा जम्मू की जानिब से। 30 रन की लीड ले ली है, सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं और आपकी स्क्रीन के सामने जो है कश्मीर की टीम और आगे आगे हनान मलिक। क्या बल्लेबाजी की है हनान ने आज, और उसके पीछे पीछे जो है कश्मीर की पूरी टीम। और ये जो है परवेज रसूल आपकी स्क्रीन के सामने, शानी कश्मीर कहे जाने वाले परवेज रसूल अभी तक पहले दिन में कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए। हल्की सी जो है ड्रिजल अब शुरू हो गई है और पिच को जो है कवर किया जा रहा है। तो यहां से न्यूज ये है कि 207 रन बनाए हैं जम्मू की टीम ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे। पहले दिन का खेल इख्तिताम पजीर। कल 9:30 बजे जो है दूसरे दिन का खेल शुरू होगा और इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। आज पूरे दिन हमारे साथ रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह कल 9:30 बजे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।